Today we are going to start a new chapter, which is some natural phenomena. In this chapter, we shall discuss two destructive natural phenomena. These are lightning and earthquakes. So basically, this is about chapter 12 of class 8, natural phenomena. Natural phenomena, and it's a one shot as well as a chapter we are gonna read as well as study this chapter. So listen carefully each and every line. Okay. So we shall discuss also what steps we can take to minimize destruction caused by these phenomena. So which these phenomena? Lightning and earthquake. Okay. So there's nothing much important in this page. It's just that about a scientist called Benjamin Franklin, who is an American scientist, and that American scientist is doing nothing but. So here is Benjamin Franklin. Okay, Benjamin Franklin, an American scientist who showed that lightning is same as what uh, the when we remove the woolen clothes from our body, what spark they make. And when we wear blank actually when not when we use a blanket, the sparks are on that. It's just that. So lightning. Okay, so you might have seen sparks on electric pole when wires become loose. This phenomena is quite when wind is blowing and shaking the wires. You might have also seen the sparks when a plug is loose in the socket. Lightning is also an electric spark, but on a huge scale. In ancient time, people did not understand the cause of these sparks. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of God was visiting them. Means that the God was angry and they are hitting the lightning. Is caused okay, the lightning is caused by the accumulation of charges, and just that it's very important you may do this in the clouds. Accumulation of charges in the clouds. We need not to be afraid of the lightning, but we have to take precautions to protect ourselves. So, the sparks that Greeks knew about. So, Greek has not studied about the sparks, but they knew about that. So, the ancient Greeks at the time of 600 BC, that when amber is basically a type of a raisin. I hope you know raisin. Raisin is a type of a shiny liquid material was rubbed with fur and attracted light objects such as hair. Okay, so it's nothing but all about the crackling sound and what I told you about Benjamin Franklin. So I hope it's clear. And Paheli and Buju are talking about nothing but they are talking about. But Buju is saying, I wonder why this took so many years to realize the similarity. The similarity is of that why the scientists took so much of time to discover the lightning. So Paheli is trying to make him clear that the hard work. This is the discovery because hard work. Okay, now we are on the next page of the chapter, and now we are going to start with the main chapter. It was just the introduction what we are going to do in this chapter, and I hope you are clear. We are going to learn about the two natural phenomena that are lightning and earthquake, and how we can take precaution to those earthquake and lightning. I hope you are clear with that. So let's do further. Okay, so here it's basically just an activity that take a plastic scale and drop to your hair, actually dry hair, and then the scale can attract a very small pieces of paper. So instead of the plastic scale, you may take
these many things. Okay, so and you have to record your observation, what you have observed from these objects, small pieces of the dry leaf, husk, and mustard seeds. And same is for your homework of the video. Now take a use ball pen. So इसमें कुछ नहीं है, बस एक आपकी एक्टिविटी है कि आपको बॉल पेन की रिफिल लेनी है, उसको अपने हेयर पे रब करना है बहुत जोर जोर से विद अ पीस ऑफ पॉलिथिन. नाउ एक पीसेस कर लो पॉलिथिन के. ब्रिंग क्लोज द ball pen refill to the polythene. Bring close and you will see the polythene pieces are retracting to the paper. So okay, it's easy. So you have to repeat same activity with these things. I had a confusion. It's another part. आपको ये दोनों एक्टिविटी वो है कनेक्टेड. ओके, सो बॉल पेन की रिफिल की जगह आपको इनसे वो एक्टिविटी ट्राई करनी है. ठीक है. When a plastic refill is rubbed with polythene, it acquires a small electric charge. Similarly, when a plastic comb is rubbed to the dry hair, and it acquires small charge. These objects are called charge object. The object which acquire charge is called charge object. In the process of charging in the refill, and the plastic comb, polythene, and hair also get charged. Let's try to charge some other objects that are familiar to you. So you have to try this also. This is nothing but about if the refill and this attracts or not. So it's not that much important. So types of charge and their interaction. So let's say what's next. So types of charges and their interaction. Basically इस एक्टिविटी को इतना पढ़ने से अच्छा है we'll do one thing that मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें हुआ क्या है. So जो आपका टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड द इंटरेक्शन, देयर इंटरेक्शन, इस चीज में आपका दो बलून लिया है, दो बलून लिए गए हैं. अब इन दोनों बलून को किया है रब किया. अब आप दोनों सेम चीज को रब कर रहे हो. ठीक है, मैं लिखती हूँ. आपने सेम चीज रब की. अब वो क्या करेंगी, चार्जेस प्रोड्यूस करेंगी. चार्जेस आए. एंड कौन से चार्जेस आए, लाइक चार्जेस इस बलून में भी आया, इस बलून में भी आया. नाउ दीज आर लाइक चार्जेस एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. रिपेल का मतलब क्या है, अगर अट्रैक्ट होता है एक रिपेल होता है. अगर ये चार्जेस नेगेटिव होता, एक नेगेटिव होता एक पॉजिटिव होता, मतलब ये अनलाइक चार्जेस होते. सो they would attract each other. So this is a photo where the two balloons are getting attracted, and this is a photo where the two balloons are getting repel or disattract. Okay, so yeah, and यही था टाइप्स ऑफ चार्जेस. बेसिकली एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव. बट ये तो आपने पढ़ रखा है पॉजिटिव नेगेटिव. इस वीडियो में चार्जेस होते हैं स्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक. सो यू मे सी नाउ सेम चीज है. ये अनलाइक चार्जेस हैं विच विल रिपेल ईच अदर. ठीक है. नाउ बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इसमें. सो now let us summarize the observation. A charged balloon repelled each other. Repelled a charged balloon. एक चार्ज बलून ने दूसरे चार्ज बलून को क्या किया, रिपेल किया.
A charge refill repelled a charge refill, but a charge balloon attracted the charge refill. So I hope आपको ये clear हो, and this is a very important thing. Attract, repel, repel. Now, does it indicate that the charge on the balloon it's of a different kind from the charge on the refill? Can we say then that there are two kinds of charges? Can we also say that charges of the same time repel each other while the charges of the different kind attract each other? Yes, it's correct. It is a convention to call the charge acquired by a glass rod when it's rubbed with silk as positive. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बोल्ड से लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके एग्जाम में ये एक्टिविटी पक्का आएगी. सो यू हैव टू स्टडी दिस वेरी केयरफुली. सो हम मार्क कर देंगे कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट में हम एक और बार अच्छे से करेंगे. नाउ इट विद द एंड ऑफ द इस एक्टिविटी की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बट बिकॉज ये एंड ये दो बहुत ही अलग चीजें हैं ना, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं सेम चीज. इट्स इलेक्ट्रोस्कोप एंड आई होप यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप बिकॉज आपने ऑलरेडी अपना जो दूसरे उसमें पढ़ रखा है चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है. सो it with the end. Acha, it is a conventional to call the charge acquired by a glass rod when it's rubbed with the cell gas positive. The other kind of charge is said to be negative. It is observed that when a charged glass rod is brought near the charged plastic straw, rubbed with the polythene, there is an attraction between the two. Which two? The glass rod and the straw. What do you think would be the kind of a charge on the plastic straw? We would guess that plastic straw would carry a negative charge. It's correct. Why a plastic straw is carrying a negative charge? It can also carry a positive charge. Now, the electric charges generated by rubbing are static. They don't move themselves. When charge move constantly an electric current. You have been reading about electric current since class 6, and that's absolutely true. The current in a circuit which makes a bulb glow, or the current that makes a wire hot, is nothing but a motion of charges. So you have to underline this. The current in the circuit which makes the it's not about so this is important. Yeah, so अभी तक we have completed. Good. अच्छा ये एक्टिविटी यहाँ से शुरू हो रही है. This is activity 12.4. Okay, good. Now, the transfer of charge. So I guess we have to study this part first. फिर हम बाद में पढ़ेंगे activity को. The aluminium foil strips receive the same charge of the charge refill through the paper clip. अच्छा हम पहले ये पढ़ते हैं. Take an empty jam bottle. Take a piece of cardboard slightly bigger than the size of the mouth of the bottle. हम देखते रहेंगे तो बेसिकली हम मार्क भी करते रहेंगे. क्या है? ये है एक कार्डबोर्ड. सी ये है एक जैम की बॉटल, तो जी बी जे बी. या सो हमारा कार्डबोर्ड थोड़ा सा बड़ा है बॉटल से. टेक अ पीस ऑफ ओके. सो then the bottle mouth, pierce a hole in it so that the metal paper clip can be inserted. Where we have to pierce a hole? Here. See, इन्होंने एक होल किया है ताकि जो ये मेटल की पेपर क्लिप है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, पेपर क्लिप है वो इधर होल्ड कर सके. लेट्स सी ये दोनों चीजें क्या है.
ये डिलीट कैसे होएगा? हम बाकी सब को डिलीट कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है एंड ये सब रखते हैं. ओके, नाउ दिस इज मोर प्रॉप्ट. Insert the paper clip in the cardboard lid so that it is perpendicular to it. अच्छा, पेपर क्लिप कार्डबोर्ड के परपेंडिकुलर होने चाहिए. सो परपेंडिकुलर, आई होप यू नो व्हाट इज परपेंडिकुलर. बेसिकली दिस इज परपेंडिकुलर और यू कैन से दिस इज परपेंडिकुलर. ठीक है, तो जब 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो, दैट्स परपेंडिकुलर. सो आई होप इट्स परपेंडिकुलर. हमें चेक करना पड़ेगा कहीं हमें झूठ तो नहीं बोल रहे. सो देखिए परपेंडिकुलर है. सो ये पेपर क्लिप है, ये कार्डबोर्ड है एंड यस इट इज परपेंडिकुलर. बेसिकली टी बनना चाहिए. ओके, सो 4 सेंटीमीटर की हमें ईच चाहिए एल्यूमिनियम फॉयल. सो इट्स एल्यूमिनियम फॉयल. जो ये लगा है ना, ये इट्स नथिंग बट एल्यूमिनियम फॉयल. अरे यार, ओके, cool. Charge a refill and touch it with the end of the paper clip. Observe what happens. Is there effect on the foil strip? So what we have to do is हमें चार्ज करनी है रिफिल को एंड टच करना है इस किस रिफिल को? रिफिल, अच्छा, इस रिफिल को हमें चार्ज करना है एंड पेपर क्लिप को टच करना है. जब पेपर क्लिप को टच करेंगे तो बेसिकली मेरे को समझ आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं. बेसिकली अर्थिंग है थोड़ा सा. इट्स अबाउट द नॉट अर्थिंग, ये अर्थिंग नहीं है बट हाँ. तो क्या होगा जब हमारा ये पेन की रिफिल चार्ज होएगी तब वो चार्जेस भेजेगा अपने इस पेपर क्लिप को. ठीक है, इस पेपर क्लिप को जब वो चार्ज भेजेगा तो ये जो पेन की रिफिल होगी वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी डिस्चार्ज. एंड ये हो गई डिस्चार्ज. तो हम मान ली डिस्चार्ज हो गई तो हम यहाँ डिस लिख देंगे और ये चार्ज हो गई. पर ये भी अपना जो है, क्या कलर चेंज कर लेते हैं ताकि समझ आ जाए आपको. सो जो आपका ये पेपर क्लिप है, दिस इज चार्ज्ड क्योंकि पेन की रिफिल ने अपना चार्ज इसको भेजा था. नाउ इफ इट इज चार्ज तो वो अपने चार्जेस किसको भेजेगी? इस एल्यूमिनियम फॉयल को जो यहाँ पे ये लगा हुआ है. अपना इस एल्यूमिनियम फॉयल को वो चार्ज भेजेगी एंड हेंस फिर वो चार्ज हो जाएगा. सो अब क्या का यहाँ डिस्चार्ज हो गया है. ये पेपर क्लिप इज डिस्चार्ज और जैम की बोतल के साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है. पेन की रिफिल डिस्चार्ज है ना. व्हाट इज चार्ज? चार्ज ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ पे वो है ये. ठीक है, सो एंड में अब पढ़ते हैं. Do they repel each other? So basically it charge it with the end of the paper clip. Observe what happened. Is there any effect on the foil strips? Do they repel or they attract each other? तो इन्होंने ये रिपेल हुई हैं. क्यों रिपेल हुई हैं? बिकॉज दोनों में सेम चार्ज गए. यहाँ पे भी प्लस गया है एंड यहाँ पे भी प्लस गया है, यहाँ पे भी माइनस गया हो या प्लस गया हो. ठीक है, मतलब रिपेल हुई है तो वो दोनों, क्योंकि ये रिपेल है. अभी इन दोनों की पोजीशन कुछ ऐसी दिख रही है हमें, ऐसी तो दिख रही है. ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, पर अट्रैक्ट किया होता तो वो ऐसे दिख रहा होता बेसिकली. मतलब दोनों एक ही हो गए अब. ठीक है, सो दे where is repel? They repel each other. Now touch other charged body with the end of the paper clip.
do foil strip behave in the same way in all cases? हमें क्या करना है? Now touch other charge body. कौन सी charge body है? अभी यहाँ पे ये charge body थी pen refill. Can this apparatus be used to detect whether a body is charged or not? Can you explain why the foil strip repel each other? The foil strip repel each other because when the pen refill and the paper clip send the charges, both have the same charge and therefore they repel each other. So इन्होंने हमसे पहले आंसर पूछा, उन्होंने रिपेल किया, इन्होंने खुद बता दिया कि वो रिपेल हुआ था. And therefore it's a simple electroscope. So I hope आपको ये समझ आया हो. The aluminium foil strip received the same charge from the charge refill through the paper clip. Remember that metal are good conductor of electricity. The strip carrying similar charges repel each other and they become wide open. Such a device can used to be test whether an object carrying charge or not is known as a electroscope. ठीक है? Is known as a electroscope. So it's called a electroscope, and such a device is known as electroscope. Okay, cool. Thus we find that electrical charge now thus we can find that electrical charge can be transferred from a charged body to another through a metal conductor, that is known as a electroscope. Touch the end of the paper clip gently with the hand. You will find a change. The foil strips, they come back to their original state. Repeat charging of foil. Charging a foil strip and touching the paper clip every time, you will find that the foil strip collapses as soon as you touch the paper clip with hand. Why does this happen? The reason the foil strip lose charge, and that what I told you. ठीक है? The reason is that the foil strip lose charge. उन्होंने charge lose कर दिया था. ठीक है? We say that the foil strip are discharged. The process of the transferring of charge to another charge body is called earthing. और बड़ी easy definition है यार. So आप देख सकते हैं मैंने आपको क्या क्या वर्ड लिखे थे. सेम वर्ड मैंने बोला था डिस्चार्ज हो गया, हम इसको डिस मानेंगे यानी कि डिस्चार्ज. फिर इसमें चार्ज आया, फिर ये डिस्चार्ज हो गया. फिर क्या फाइनली चार्ज बचा था पेपर क्लिप, वो अर्थिंग का प्रोसेस हो गया. ठीक है. Now, during the development, earthing is provided in buildings to protect from electric shocks. Yes, we know. Due to any leakage of the electric current. Cool. During the development of a thunderstorm, the air currents move. It's very important. आप कलर चेंज कर लेते हैं. So, during the development of a thunderstorm, the air current moves upward. तो thunderstorm में जो air current होता है वो कहाँ चला जाता है? Upward. ये देखो यहाँ पे, ये है हमारा बेसिकली एयर करंट. एक्चुअली यहाँ एयर करंट नहीं है, तो हम पहले यहाँ देख लेते हैं. Air current moves upwards while the water droplets move downwards. The vigorous movement causes separation of charges. The water droplet, so the air current moves downwards, upwards, and the water droplet moves downwards. This vigorous movement causes the separation of charges.
by a process not yet completely understood. The positive charge collect near upper edges of the cloud and the negative charge accumulate near the lower edges. This accumulation of positive charge near the ground also, when the magnitude of this accumulated charge become very large, the air which the basically lightning का process है, the air which is normally poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow. Negative and positive charges meet, producing streaks of bright light and uh, bright light के बाद कहाँ गया, हाँ, bright light and sound. We see streaks as lightning. The process is called electric discharge. So इतना बड़ा definition याद करने की ज़रूरत नहीं है. It's not electrical discharge, it's lightning. It's nothing but lightning. Yeah. देखो, तो जो उन्होंने बोला था कि जो लोअर एज होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो कलेक्ट हो जाती है नियर द अपर एज. तो ये है अपर एज, अपर एज, and this is the lower edge. Okay, this is the upper edge, मतलब I mean to say this is the upper edge and this is the lower edge. ठीक है, arrow कहाँ गया हमारा? Okay, now positive charges collect near the upper edge and of the cloud and negative charges accumulate near the lower edge. This accumulation between positive charge, अच्छा करंट accumulation है ये basically, ठीक है. तो और जो ग्राउंड है ये आपका ग्राउंड है. सो ग्राउंड पे अभी है हमारे पॉजिटिव चार्जेस. आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस इज ऑल अराउंड. एंड तो क्या करते हैं ये आप हमने पढ़ा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस बेसिकली अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इन दोनों ने रब किया मतलब ये अट्रैक्ट हुए, ठीक है. उनकी रबिंग से, उनकी अट्रैक्शन से क्या हुआ, देखो यहाँ से बेसिकली यहाँ पे रब हुए हैं दोनों, है ना, और यहीं से बिजली आनी शुरू हुई. दिस इज नथिंग बट द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज लीडिंग टू लाइटनिंग. अब हमारे प्रिकॉशंस हैं, फिर चैप्टर खत्म, मतलब प्रिकॉशन एंड अब आफ्टर अर्थक्वेक. नाउ the process of electrical discharge can occur between two or more clouds or between clouds and earth. Today we may not to be get frightened by lightning like ancestor did. Now we understand the basic phenomena. Scientists are trying too hard to improve this understanding. However, lightning strike could destroy life and property. It is therefore necessary to take measures to protect ourselves. Metal objects do not lie on the ground. Instead, squat low on the ground. Place your hand on knee. So basically एक ही lightning safety है. बाहर हो तो स्क्वाट की पोजीशन में बैठ जाना है, मतलब सबसे छोटी चीज आप लगने चाहिए हो. Squat. This is squat. This is a position of squat. Lightning safety. During lightning and thunderstorm, no open place is safe. Yes, we know that. Hearing thunder is an alert rush to a safe place. After hearing the last thunder, wait for some time before coming out from the safe place. And this
दीज आर, तब तक आपको ऐसे ही बैठे रहना है, ठीक है। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। तो क्या है सेफ, हाउस या बिल्डिंग is a safe place. If you're traveling by car or a bus, you are safe inside the windows and the doors of the vehicle are shut. Don't do's during a thunderstorm, मतलब नहीं करना है ऐसा outside. Open vehicle like motorbikes, tractors, construction machineries, open cars are not safe. Open field, tall trees, shelters and elevated park places do not protect us from lightning strokes. Carrying an umbrella is not at all a good idea during a thunderstorm. क्यों हम एक अम्ब्रेला कैरी नहीं कर सकते? तो अभी तो मैं आपको अम्ब्रेला की फोटो यहाँ कहीं दिखा नहीं सकती, बट इफ यू हैव सीन एन अम्ब्रेला, वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरीका का होता है वो कुछ, उसके ऊपर ना एक ऐसे करके, बल्कि मेरे को यही सबसे ज़्यादा बड़ा बनाना था, यही सबसे छोटा बना है। तो हाँ अम्ब्रेला ना, मान लो ये आपका अम्ब्रेला है, ये इस टाइप का होता है ना। ये जो आप देख रहे हो इसके ऊपर का एंटीना, ये बेसिकली अंदर की तारों को जोड़ने के लिए होता है, जिसको अम्ब्रेला का छत बना के रखती है, रूफ है ना। तो वो मेटल का होता है, और लाइटनिंग सब एज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लाइटनिंग सबसे पहले जाके उस पॉइंटेड एज पे आके गिरेगी, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। आप फेंक दो, छाता ही कहीं रख दो, ठीक है। सो इन अ फॉरेस्ट टेक अ शेल्टर under shorter tree. If no shelter is available and you are in an open field, stay far away from the trees, stay far away from the poles or other metal objects. Do not, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया। तो आपको सबसे छोटी जगह ढूंढनी है, एंड वापस मैं बोल रही हूँ स्क्वाट की पोजीशन में बैठना है। Inside the house, safe position during lightning. Squat. लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स। तो आपको एक काम करना है, बस वो जो कॉर्ड्स हैं उनको निकाल देना है अपने उससे। During a thunderstorm, contact with these should be avoided. It is safer to use a mobile phone and cordless phone. However, it is not wise to call a person who is receiving a phone through a wired phone. Bathing should be avoided, क्योंकि bathing से अगर आप शावर ले रहे हैं तो जो करंट है वो पानी के अंदर आ सकता है, and that's why it should be avoided to bath. Thunderstorm, to avoid contact with running water, electrical appliances like computer, TVs and should be unplugged. Electric lights can remain, because जो टावर होता है ना उसमें से शॉर्ट सर्किट होके आपके घरों में भी हो सकता है वो, तो इलेक्ट्रिक लाइट्स कैन रिमेन ऑन बिकॉज वो हमें कोई हार्म नहीं देती है। लाइटनिंग कंडक्टर्स, सो बेसिकली इट्स अ लाइटनिंग कंडक्टर जो आप देख रहे हैं खड़ा हुआ अभी, it's a lightning conductor. Lightning conductor is a device used to protect buildings from effective lighting. A metallic rod taller than the building is instead of the wall of the building. During its construction, one of the ends of the rod is kept out in the air and the other is buried deep in the ground. The rod provides easy route for the transfer of electric current to the ground. The metal column used during construction, electrical wires and water pipes in the buildings also protect us from an extent, but do not touch them during a thunderstorm. So basically मैंने जितना भी बोला, एक सेफ जो सबसे ऑप्शन है वो है हमारे पास ये लाइटनिंग कंडक्टर। तो ये है एक लाइटनिंग कंडक्टर जो आप ऐसे खड़ा वो देख रहे हैं, जिसमें मैंने रेड रेड कलर का वो किया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो नीचे जा रहा है, ये बेसिकली पूरी मेटेलिक रॉड है। ये मेटेलिक रॉड यहाँ पे जाके खत्म होती है, जितना भी सारा ये बेसिकली अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड, ठीक है। तो ये सारा अंदर जाके खत्म होता है। एंड दिस इज अ कॉपर प्लेट। कॉपर प्लेट क्यों यूज होती है? ताकि मतलब
अर्थिंग हो रही है ना, तो दैट्स व्हाई कॉपर प्लेट इज यूज्ड। और आप पता चल गया होगा क्यों बिल्डिंग को टॉलर बनाया जाता है। इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर लाइटनिंग अगर स्ट्रक हुई तो फिर बिल्डिंग के ऊपर ना हो सीधा, ठीक है, इसके ऊपर हो, ताकि जितना भी है ये ऐसे नीचे नीचे जाके मतलब हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। ये तो हो गया लाइटनिंग। यहाँ पे लाइटनिंग खत्म हो गई, ठीक है, तो लाइटनिंग इज डन। अर्थक्वेक्स, you just learn about thunderstorm and lightning. These natural phenomena can cause large-scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about a thunderstorm developing area. Always a possibility of lightning and cyclones accompany it. So we get time to take measures to protect ourselves from the damage caused by these phenomena. Now, there is a however one natural phenomena which we are not able to predict accurately. It is an earthquake. It can cause damage to human life and property on a huge scale. On a major earthquake occurred in India on October 2005. इट्स इम्पॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर में, एक्चुअली कश्मीर में एक वो आया था, अर्थक्वेक आया था उरी एंड तंगधर में, नॉर्थ कश्मीर में आया था। बिफोर द मेजर अर्थक्वेक अकर्ड, उससे पहले 26 जनवरी 2001 इन भुज डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में एक अर्थक्वेक आया था। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट, ओके, आप पूछ सकते हैं क्या क्या हुआ था, मतलब एक, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। What is an earthquake? What happens when it occurs? What can we do to minimize its effect? These are some of the questions which shall we discuss below. What is an earthquake? An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. Basically tectonic plates का ये आपका shaking and trembling होता है बस। टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के अंदर की प्लेट्स होती हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। तो ये एक मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अर्थक्वेक इन 2005 इन द नॉर्थ कश्मीर, उरी एंड तंगधर। हाँ, so it is caused by a disturbance deep inside the earth's crust. Earthquakes occur all the time all over the earth. They are not even noticed. Major earthquakes are much less frequent. They can cause immense damage to the building, bridges and dams and people. There can be a great loss to life and property. Earthquake can cause flood, landslides and tsunamis. A major tsunami occurred in the Indian Ocean on 26 December 2004. All the coastal areas around the ocean suffered huge losses. ये भी important नहीं है, this is just homework, ये कुछ important नहीं है। What could cause a disturbance inside the earth? Tectonic plate. Now we know that tremors are caused by the disturbance deep down inside the uppermost layer of the earth crust. So आपने अपने ये ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, इसमें बिल्कुल अच्छे से वो नहीं दे रखा, दे रखा है। सो जो आप ये रेड पार्ट देख रहे हो बाहर का आउटलाइन, ये वाला, और तो जूम नहीं हो सकता, पर हाँ, ये जो आप देख रहे हो रेड कलर का ऐसे एक आउटलाइन है, ये अर्थ का क्रस्ट है, जो सबसे थिनेस्ट पार्ट भी होता है। क्रस्ट के बाद आता है मैंटल, फिर आता है आउटर कोर, और ये होता है इनर कोर, हॉटेस्ट होता है ये structure of the earth. The outermost layer of the earth is not in one piece. It is fragmented. Fragment is called plate. These plates are continuous motion when they brush past another. My grandmother told me that the earth is balanced on a horn of the bull. When the bull shifts it to the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? No, Buju, it's not true. Why Pahedi did not answer his question now? Where is Pahedi today? तो हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। The outmost,
ठीक है. In an ancient time, people did not know there the true cases of earthquake. Their ideas before therefore expressed in mythical stories such as the one told by Buju grandmother. ठीक है, तो बुल के हॉर्न से हमारा जो पूरा अर्थ है वो ऐसे बुजू सोच रहे उठाया गया है. No, that's not true. Similarly, the myth they were prevalent in other part of the world. Okay, ठीक है यार. Our plate goes under. तो ये important है basically. It's I guess a seismograph and protection against earthquake. So हम जल्दी से रीडिंग करके समझाती हूँ मैं आपको. ठीक है, हमने पढ़ लिया ये. Our the outermost layer of the earth is not one piece, it's fragmented. Each fragment is called plate. These plates are continuously in motion when they brush past one another, or plate goes under another due to collision. They cause disturbance in the earth crust. It is this disturbance that shows up an earthquake on the surface of the earth. So basically ये जो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें ये earthquake है. And this is very important. अब मैं यहाँ पे अलग कलर से करूँगी ताकि हम मिक्स ना हो जाए. ये सारा इम्पोर्टेंट है तो ये भी इम्पोर्टेंट है. सिंस द अर्थक्वेक इधर कुछ नहीं बोला गया है. वीक जोन्स जो अर्थक्वेक जहाँ ज़्यादातर आता है ना उसको बोलते हैं सेस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन बोलते हैं. इन इंडिया ज़्यादातर सेस्मिक और फॉल्ट जोन कौन कौन से हैं? कश्मीर है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयंस हैं, और पूरा होल नॉर्थ ईस्ट run of Kutch, राजस्थान एंड इंडो गैंगेटिक प्लेन. सम एरिया ऑफ साउथ इंडिया है इसमें भी in the danger zone. ठीक है. If scientists know so much about earthquake, when also they predict next, right? Okay. Although we know for sure what causes an earthquake, it is not yet possible to predict. I read somewhere that underground explosion called tremors. Okay. अंडरग्राउंड एक्सप्लोजिशन. तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं इस जगह पे. So yes, we can write this. तो अगर आप इसको भूल जाओ तो इसको एक बार पढ़ लेना. हम एक बार इसको ना यहाँ लिख लेते हैं इधर. Okay, I hope it's clear. ठीक है. The power of earthquake is expressed in the terms of magnitude on scale called the Richter scale. तो क्या होता है, जो power of earthquake होती है वो होती है 0 से लेकर, गेस करो कहाँ तक होती है. 0 से लेकर 100 तक, 1000 तक, 20 तक, 30 तक, 0 से लेकर 10 तक. 0 से लेकर 10 तक होती है वो पावर. ठीक है, 10 तक वो पावर होती है. एंड higher than 7 can be destructive. On the Richter scale, both Bhuj and Kashmir, ये मत सोचना मैंने भुज को काट दिया, भुज में भी आया था. Both Bhuj and Kashmir earthquake has magnitude greater than 7.5. और जो 7.5 का magnitude होता है वो बहुत ज़्यादा
डिस्ट्रक्टिव होता है। मेरे को नहीं पता। The tremors produce waves on the surface of the earth. These are called seismic waves. The waves are recorded by an instrument called seismograph. The instrument, तो जो tremors produce होती हैं उन waves को बोलते हैं seismic waves. Seismic waves. The wave are recorded by an instrument called the seismograph. The instrument is simply on a vibrating rod. The instrument is simply a vibrating rod pendulum which start vibrating when tremors occur. A pen is attached to the vibrating system. The pen records the seismic waves. Waves को बोलते हैं seismic waves और seismic waves and the machine is known as the seismograph. ये वो मशीन है and ये वो है. Like many other scale in science, decibel is another example. Richter scale is not linear. This measure an earthquake magnitude of 6.5 times destructive energy of the earthquake magnitude. In fact, 2 in magnitude means 1,000 times more destructive. Therefore, an earthquake magnitude 6 has 1,000 times more destructive energy than 1,000 into 6 or 4. Protection against earthquake. We know the earlier pages that earthquake cannot be predicted. We have also seen that they can be highly destructive. तो मतलब नेसेसरी है. तो अब हम पढ़ेंगे बस कुछ नहीं पढ़ेंगे. अब हम प्रोटेक्शन पढ़ेंगे यार. ठीक है. तो क्वेक सेफ होता है. कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट. हाईली सेस्मिक एरियाज हम यूज करते हैं. मड और टिम्बर इज बेटर. ठीक है. रूफ के लिए से लाइट वो करना है. कबर्ड अटैच होनी चाहिए वॉल से. फोटो फ्रेम वाटर हीटर्स मत टांगा करो. लोगों पे गिर जाएंगी तो बिल्डिंग कैच कर लेंगी फायर. तो फायर एक्सटेंशंस रखो. टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर. If you are in bed, do not get up. Protect your head with a pillow. Find a clear spot away from the building. Open ground में जाओ. If you are in the car or a bus, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear spot. Do not come out till the tremors stop. और ये हमने पढ़ा था बेसिकली यहाँ पे. तो यहाँ हमारा पूरा चैप्टर हो चुका है ख़त्म. तो चैप्टर काफ़ी बड़ा रहा था. मतलब ठीक चैप्टर था. और इस चैप्टर की थोड़ी सी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है. एंड मेरा बस इतना ही कहना है कि चैप्टर हो चुका है ख़त्म. आई एम वेरी हैप्पी. सो अब एक्सरसाइजेस बची हैं इस चैप्टर की एंड आई डोंट. तो ठीक है. तो चैप्टर ख़त्म हो गया है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये जितने भी कीवर्ड्स हैं होप आप सबको सारे कीवर्ड्स आ चुके हैं अब. एंड आप पढ़ सकते हो व्हाट यू हैव लर्न को. एंड ये करना है एक्सरसाइज. तो जल्दी से कमेंट में बताओ. जैसे मैं करवाई दूंगी बिना बोले भी. लेकिन उनको पता है बच्चे एग्जाम के लिए बहुत करते हैं. एंड ये पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.